Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is collision theory. The basis of collision theory is that the basic requirement for a reaction take place is that the reacting species that is atoms, molecules or ions must collide with each other, and the number of collisions per second per unit volume of the reacting species is called collision frequency. तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी एक रिएक्शन तभी कंप्लीट हो सकती है जब उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज जिसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी या आयन्स भी, दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, और द नंबर ऑफ द collisions per second per unit volume of the reacting species, that is called the collision frequency. And at ordinary temperature and pressure, for gaseous medium the collision frequency of binary collisions is of the order of 10 raised to power 25 to 10 raised to power 28. तो क्या देखा गया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम गैसियस मीडियम के रिएक्टेंट्स ले लेंगे तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम बाइनरी कोलिजन्स ले लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी कोलिजन्स? बाइनरी कोलिजन्स हो गए दो वो कोलिजन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स, दो रिएक्टिंग स्पीशीज, दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स या दो आयन्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 raised power 25 to 10 raised power 28 होती है.
the number of collisions is so high that the number or this number is so high that if all the collisions were effective, the reaction should be completed in a fraction of a second. In a fraction of a second. तो ये जो कोलिजन्स है इनका नंबर जो है वो उतना ज़्यादा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी में, दैट इज 25 to 10 raised power 28. If this number is so high, if all the collisions, अगर ये सारे collisions जो होंगे इफेक्टिव होंगे तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए किस में, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट सो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है all the collisions between the reacting species at a given temperature are not effective or non-effective. इसका मतलब ये है कि वो जो collisions हैं ये between the reacting species, ये तमाम collisions effective नहीं हैं. And the collisions which are effective and produce the product are called effective collisions. तो इसका मतलब ये है ये जो collisions between the reacting species होते हैं at a given temperature, ये तमाम collisions जो होते हैं वो effective नहीं होते हैं, और वही collisions जो effective होते हैं that produce the product. So these effective collisions, what are these effective collisions and what are the factors on which these effective collisions depend? So these effective collisions arise due to the following two factors. The effective collisions, that means वो collisions जो reacting species के atoms, molecules, ions collide होके product बनाते हैं जिनको हम effective collisions कहते हैं. The effective collisions arise due to following two factors. तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर ये इफेक्टिव कोलिजन्स डिपेंड करते हैं? नंबर 1 इज एनर्जी फैक्टर,
what is this energy factor? For the collisions to be effective, the collisions depend upon the following factors. That means one is energy factor. For collision, to be effective, the colliding molecules must have energy more than a particular वैल्यू। तो एक फैक्टर ये है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं, जो आपस में टकरा के जिनको प्रोडक्ट बनाना है, उनको एक एनर्जी उनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए वो एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी which the colliding molecules must have to make the collisions effective is called threshold एनर्जी। तो उस एनर्जी को, जो मिनिमम एनर्जी इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, जिससे ये कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। Thus, the reacting or colliding molecules should have energy equal to or more than the threshold value। तो एक फैक्टर ये है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास जब वो कोलाइड करेंगे, सो दैट देयर कोलिजन्स विल बी इफेक्टिव, उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। बट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, most of the molecules do not have energy equal to or greater than threshold value। तो वो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में
10⁻25 to 10⁻28 हो और वो ऑल कोलिजन्स इफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें एक फैक्टर ये भी है कि उन कोलाइडिंग मालिक्यूल्स की एनर्जी, सब कोलाइडल मालिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होती है एट दैट गिवन टेम्परेचर. This is the first factor, and the second factor is orientation factor. Number second is orientation factor. For the effective collisions, the colliding molecules must have proper orientation. At the time of collision. तो दूसरा फैक्टर यह है कि वन फैक्टर इज दे मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशहोल्ड वैल्यू. दूसरा फैक्टर यह है कि जब वो कोलाइड करेंगे तो उस वक़्त उन कोलाइडल मॉलिक्यूल्स के पास, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास, उन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन जो होनी चाहिए वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, फॉर रिएक्शन बिटवीन, अगर हम रिएक्शन ले लेंगे, रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, the products are formed only when these molecules have proper orientation. Which give rise to effective collisions. On the other hand, if the colliding molecules do not have proper orientation, the collisions will not be effective. जैसे कि हम इन मॉलिक्यूल्स को दिखाएंगे कि कैसे उनके जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो रिजल्ट करेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स. फॉर एग्जांपल, we will take this is carbon and this is oxygen. It reacts with nitrogen
oxygen, oxygen, carbon and nitrogen dioxide. This is effective collision. Give rise to the product forms is carbon monoxide and nitrogen dioxide. This is proper when they have proper orientation. The collision is effective collision. They result in the formation of carbon dioxide and nitric oxide. So this is proper oriented collision. On the other hand, if they don't have proper orientation at the time of the collision, this result in the ineffective collision. Ineffective collision. Product is not formed, or also again ineffective collision. तो ऐसा है कि at the time of the collision, this is the proper orientation between the reacting species, between the reacting molecules. They result in the proper, this is proper orientation. They result in the collisions are effective and they result in the formation of the product. Here, at the time of the collision, the molecules don't have proper, no proper orientation. Collision. So they collide and rebound and come back and do not form the product. Thus, इसलिए the collisions जो reacting species के molecules में होते हैं, if they don't have energy equal to the threshold value, or their orientation is not proper orientation at the time of the collision, they do not result in the formation of the product. So उस वक्त क्या होता, the colliding molecules they rebound back in these cases and do not form the product. So such collisions are not effective collisions. This was all about the collision theory and the factors which are most important while forming the product during the collision theory is that the colliding molecules, they must have the energy equal to the threshold value and they must have proper orientation at the time of the collision.